Hello students and welcome back to BankExamsToday.com. My name is Ramandeep Singh and today we are going to discuss the Bank of Baroda Sales Manager previous paper. पिछला जो paper हुआ था 16th of March 2025 को we are going to discuss that. Based upon that, I'm going to discuss the syllabus. In the past, I have already discussed the syllabus, but previous paper discuss करना ज़रूरी है. Bank of Baroda Sales Manager course is available on BankExamsToday.com, in which we are providing video classes, notes, quizzes, and the test series. Complete syllabus coverage. Whatever I'm going to discuss today is available in the course. So ये simple exam pattern पिछले साल था. There was quant reasoning English and the professional knowledge. Last years में ये हमारा pattern यही चला आ रहा है. Reasoning ability में in the previous paper, what happened in the month of March? लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट वाले सिंपल क्वेश्चन थे. मूविंग फॉरवर्ड फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड आपका एक काइंड ऑफ पजल कह लीजिए, सिंपल आया था. ये कंपैरिजन पजल वाज देयर, मंथ बेस्ड पजल वाज देयर. सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स, paragraph based inferences, statements and conclusion. So this was the pattern in the previous years. आपका जो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे that was from puzzles and setting arrangement and the reasoning ability, and it was kind of difficult. Quantitative aptitude में simplification was there, missing number series was there, arithmetic में आपके partnership, age based question, Casslet DI. So these kind of questions were there. Because of the simplification and number series and even arithmetic, it was relatively easy. In the English language, there was reading comprehension, एक reading comprehension था, followed by 7 questions from the error detection, match the columns. It was relatively easy. In the professional knowledge, there were 15 questions from RBI circulars. Total 15 questions directly from RBI circulars, 7 questions from Negotiable Instruments Act, 3 questions from Banking Regulation Act, 10 questions from MSMED Act, 4 questions from Union Budget, 1 question from Coinage Act, Indian Coinage Act, 3 questions from Working Capital Committees, and 10 miscellaneous questions were there. And then 7 questions from Marketing Management, right? So what we have noted here, देखो, बिफोर 2024 से पहले भी एग्जाम होता था सेल्स मैनेजर का, बट देयर वाज लॉट मोर वेटेज टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट. ज़्यादातर क्वेश्चन मार्केटिंग मैनेजमेंट से ही आते थे, लाइक 30-35 क्वेश्चंस. बट in the previous year, fewer questions were asked from marketing management. More number of questions were asked from RBI circulars and the laws, as you can note it down here, right? A lot more questions from asked from these topics. Union budget में भी आपकी government schemes में से जो questions directly आए थे, so 4 questions were from government schemes, right? So the pattern has been changed. This is the new pattern. Based upon that, you should do your preparations. Anyways, you have to study the marketing management. पहले सिर्फ marketing management से ही questions आते थे, marketing management and strategic management, and some of the financial awareness. But now you can see lot more questions are asked from the RBI circulars and master circulars. Laws, some of the unusual law, MSMED Act उतना कोई ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं थे, लेकिन लास्ट ईयर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे इसमें से. unusually high number of questions were there. So previous year के questions, let's discuss that. In terms of section 2 subsection D, the definition of rupee coin means a rupee which are legal tender in India under the provision of Indian Coinage Act. Again, RBI Act का question sir, what is the range of denomination for bank notes issued by RBI, rupees 2 to rupees 10,000. This was an RBI circular question which is not relevant right now. अभी उतना relevant नहीं रहा क्योंकि circular पुराना हो गया है. Even this was RBI circular question. Again, RBI के circulars वाले questions हैं. Which foreign currency is permitted for FCNR deposits? Any freely convertible currency. So FCNR types of foreign currency accounts. It's available in the course. General banking में से भी काफ़ी questions थे. Again, sovereign gold bond से question था. Banking Regulation Act section 45ZA. Again, Banking Regulation Act के questions थे आपके. Which of the following is not the transaction authorized by bank under section 6? Buying and selling of shares
ये अलाउड नहीं है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आए थे फॉर द ये स्टेल चेक वाला क्वेश्चन था। सो फॉर द पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138, सो चेक बाउंसिंग वाली जो सेक्शन 138 है उसमें से क्वेश्चन आया था आपका। बैंक शुड असाइन मॉनिटरिंग ऑफ लार्ज क्रेडिट एक्सपोजर, again RBI circulars, negotiable instruments act, again RBI circulars, negotiable instruments act, again negotiable instruments act, ये negotiable instrument act again, how many parties are involved in promissory note, negotiable instruments act again, FSR report released by RBI में से क्वेश्चन आया था, एक दो क्वेश्चन दोनों उसमें से आए थे। सो FSDC जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, it was very popular like last year, काफ़ी न्यूज़ में थी, that is why it was there in the exam. General awareness का question FSDC, it was very popular last year. मार्च के मंथ में ये काफ़ी पॉपुलर था, इसलिए इसमें से क्वेश्चंस आए थे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ RBI's बोर्ड मीटिंग्स, जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं 6 times in a year, that is why it is bi-monthly. Which of the following is not 4 P's of the मार्केटिंग मिक्स में से क्वेश्चंस आए थे आपके। RBI गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट देनी पड़ेगी फॉर द सेविंग बैंक अकाउंट, इट्स एन RBI सर्कुलर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगेन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में से क्वेश्चन से। ग्रीन इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, अगेन सेक्शंस ऑफ प्रोमिसरी नोट, FD टेन्योर, मैक्सिमम एंड मिनिमम। RBI गाइडलाइंस फॉर करंट अकाउंट ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉइन्स इज द लीगल टेंडर, अगेन ये भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टाफ कंसेशन, deposit interest rate on deposit 1% extra from the customers. What is the annual percentage of profit banks must transfer to the statutory reserve fund? Again RBI की guidelines, right? So यहाँ पे students एक चीज़ जो आपने notice करी है कि RBI के circulars के बिना you cannot crack the exam. Are the questions that I have shared, these are not the exact questions, these are memory based questions. क्योंकि एग्जैक्ट पेपर सो मिलता ही नहीं है बेसिकली, दैट्स एन ऑनलाइन एग्जाम, आप टिक करके आ जाओगे, आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियसली यू कैन मेमोराइज इट एंड यू कैन टेल अस लेटर ऑन। सो इसी तरह से हमने पिछले साल के क्वेश्चन इकट्ठे करे हैं, दैट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन सी इन योर एग्जाम, इन द रियल एग्जाम. So this is the plan that we have prepared, that you should start your preparations. Anyways, you should study the marketing management first. Marketing management, product life cycle, marketing types, product management, pricing decision, distribution strategies, promotion mix, brand management, marketing research का basics, digital marketing. These are the basic topic. मार्केटिंग मैनेजमेंट का बेसिक बुक जो आपने अपनी MBA में शायद पढ़ा हुआ है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एनीवेज वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना एग्ज़ाम निकालना एक्चुअली टफ है, बिकॉज इंटरव्यूज़ में भी मार्केटिंग मैनेजमेंट से ही क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, तो ये आप याद रख के चलिए। मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड मॉड्यूल्स में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एज यू माइट हैव नोटिस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से आते हैं, followed by Coinage Act, IBC, SURF IC, MSMED Act, Banking Regulation Act, आपका RBI Act. इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन और RTA एक्ट में से उतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ऊपर वाले 7 एक्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मूविंग फॉरवर्ड, RBI सर्कुलर्स में कुछ एक मास्टर सर्कुलर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, IRAC नॉर्म्स, KYC, बेसल नॉर्म्स, एक्सपोजर नॉर्म्स, हाउसिंग फाइनेंस के नॉर्म्स हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये अलग से टॉपिक्स हैं, बट ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मास्टर सर्कुलर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और मंथली बेसिस पे आपके RBI सर्कुलर्स में काफ़ी अपडेट आती रहती है, एंड वी डू आवर एनालिसिस एंड वी प्रोवाइड द एनालिसिस टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आप थोड़ा पढ़ के चलें IRAC नॉर्म्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप रेशियो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल कमेटीज, कैपिटल बजटिंग, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये आपको पढ़ना है, फॉलोड बाय रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया, और गवर्नमेंट स्कीम्स आप पढ़ के चलें। दिस लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, पूरा कंप्लीट लिस्ट नहीं है। PM विश्वकर्मा स्कीम, जीवन ज्योति बीमा योजना है, आप बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, कुछ एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स हैं, PPF है आपकी, APY है आपका, PM स्वनिधि, मुद्रा योजना, जनधन योजना, बहुत सारी स्कीम्स हैं, MSME समाधान स्कीम, सूर्य घर योजना,
PMEGP, CGT, MSc very important for MSMEs, very important. तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, रफली 40-45 स्कीम्स होंगी, आपको सारी की सारी पढ़नी है. 2-3 सिटिंग्स में आप इजीली पढ़ सकते हो. यूनियन बजट में जो लेटेस्ट स्कीम्स आई हैं वो भी पढ़नी है आपको. सो मूविंग फॉरवर्ड, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, foreign currency accounts, remittances, news related to banking. Moving forward, monetary policy updates, mergers and acquisitions in banking, digital banking, developments, important banking terms and abbreviations, whatever is happening in the banking and the financial industry, तो वो आपको पढ़ना है, very important. So Bank of Baroda sales manager, Bank of Baroda manager sales or sales manager course is available on BankExamsToday.com, in which we are covering the entire syllabus with the help of video classes, notes, and the quizzes. This is my WhatsApp number where you can ask your doubts and we are going to answer all your doubts. List of our successful students in the past. All these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams, and we are really, really happy for them. You can be one of them in the future, and yes, you will be one of them in the future. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts and we are going to answer all your doubts. कुछ भी आपके mind में doubt है, please ask your doubts. We are here to answer your doubts. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye-bye.